Hi, first of all, very, very congratulations. Thank you. So, how you feeling after, getting this rank? Okay. Okay, Fine. Yeah. fine, ठीक है, आ गई बस. Oh, feeling elated. Really happy. I think अगर नहीं आती तो ज़्यादा दुख होता, but अब आ गई है तो it's good. I'm feeling very happy. So, आपकी सबकी expected rank आई है या you expected something else? Unexpected lines, but then in UPSC you can't really predict your rank because it's very Okay. competitive. So, Yeah. So, one thing which you would like to tell to the UPSC aspirant कि वो अपनी journey से जो आपने सीखी है कि वो गलती बिल्कुल भी ना करें. आई थिंक आंसर राइटिंग पे फोकस जो है वो सबसे ज़्यादा करें Okay. बिकॉज मेंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो वो उसको नेग्लेक्ट करने का गलती ना करें. Okay. Yeah. Amazing. Yes, I think practice and revision are important. If you neglect either of these, then it's not good. Yeah, I would say कि static पे बहुत ज़्यादा फोकस रखो, और even if you are doing graduation और आप तब प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो आप पढ़ रहे हो उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ो, बिकॉज यू नेवर नो कि कब कहाँ से क्या आ जाए. कई बार मेंस में कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो स्ट्राइक करते हैं कि तुमने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ा था या ऐसे में काम आ जाता है. सो मेक अ होलिस्टिक प्रिपरेशन, दैट इज So, last year prelims का CSAT बहुत tough था. So what are you expecting? और आपने तो उसमें अगर वो क्रैक करके आप आगे बढ़े तो like hats off to you. तो इस साल का क्या आपको लग रहा है कि what will be the toughest part in this UPSC whole UPSC exam? सो बिगिनिंग विद प्रीलिम्स तो सीसैट तो टफ दोबारा होने ही वाला है, Okay. बट पीपल विल बी वेल प्रिपेयर्ड दिस टाइम, तो मे बी पीपल कैन डील विद इट बेटर दिस टाइम. Okay. Yes, I think CSAT will only get tougher if at all. It's not going to get easier than that. So people need to focus equally on CSAT as much as they do on paper one. Also, the options which are in prelims, like only one, only two, so those are very difficult things to, I mean, to decipher how to go about. Also कि अभी 23 का जो रिजल्ट निकला है और साथ में जो आंसर कीज निकली है, तो वहाँ से PYQs का एनालिसिस भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा. सो आई वुड से कि जितने भी 23 के क्वेश्चंस है उनका नॉलेज बेस उससे भी बढ़ाए, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. Yeah. So what is one thing which you cherish in your whole journey? Of course, apart from seeing your name in the rank, in the list, उसके अलावा what do you enjoy? What did you enjoy most इन द प्रोसेस in the process? आई थिंक पूरे प्रोसेस के दौरान वी ग्रू एज अ डिफरेंट पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ फ्रॉम जो हम लोग बैचलर्स के स्टूडेंट थे एंड जो अभी हम लोग हैं, तो दैट इज समथिंग आई चेरिश, द चेंज इन पर्सनालिटी. I think we gather a lot of knowledge over the process, so now we know a lot about the world and about our environment. So I really like the knowledge that we've received over time. I would say कि final जब interview भी हुआ, so we got to meet some very big personalities and also have a conversation with them. That was very good. That was very enriching. Or on the whole process, it nurtured a person. So that is something I would take with Yeah. myself. So when you were preparing for this exam, so you used to be updated with current affairs and everything. So how much you are updating yourself after getting rank? Are you still updated with current affairs? And don't lie, I can ask anything. Well, after my interview, I have stopped reading newspaper, so I wouldn't lie. Okay. Not much. I'm on a complete break for now, so Okay. I'm not doing anything besides just enjoying this phase. I just glanced through, but I am also doing my master's, so I Okay. have to attend those classes regularly. But other than that, अगर नहीं भी होता, still I would not read the newspaper whole, I would say. और मुझे लगता है कि इतनी टफ जर्नी के बाद अगर थोड़ा सा है ना, यू नीड अ ब्रेक. उसके बाद तो फिर वैसे भी सर्विस में जाना ही है और फिर से दोबारा से वही मेहनत करनी है. सो व्हाट अबाउट लबासना? हाउ एक्साइटेड यू आर एंड व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दैट? So my plan is to again attempt, Okay. give another attempt. So if I clear prelims, then no Lavasana. Okay. I'm excited for Lavasana and the journey ahead. So a lot of shopping, a lot of planning to do in the days to come. Yeah. Same, very very excited to go meet all the new friends, make new friends, of course. Yes, So of course. very excited. Thank you so much and congratulations once again.